apa kabar? Saya Panda menikmati Idul seperti kami bertiga. Nama saya Rana Umar. Nama saya Muhammad Yusuf Saab. Nama saya Desi Reaction आज एक और शादी में स्टूडियो पावर ऑफ TNI Indonesian National Army Force Military Power video created by military weapons luar biasa sangat keren dan hebat dan keren dan mantap. जिन दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगेगी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो के आखिर में हम आपके साथ अपने हालात का इजहार करेंगे, उस वक्त तक हम हटाते रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Subscribe this channel, link in description box. Hello everyone, we are glad you joined us today because the topic we're going to speak about is the Indonesian National Armed Forces. The Indonesian National Armed Forces are the military forces of the Republic of Indonesia, consisting of the Army, Navy, and Air Force. The President of Indonesia is the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Initially formed with the name of the People's Security Army, or the TKR, then later changed to the Republic of Indonesia Army before changing again its name to the Indonesian National Armed Forces to the present. The Indonesian Armed Forces would be formed during the Indonesian National Revolution, when it undertook a guerrilla war along with informal militia. As a result of this, and the need to maintain internal security, the armed forces, including the Army, Navy, and Air Force, were organized along territorial lines, aimed at defeating internal enemies of the state and potential external invaders. Kami cinta Indonesia. When it comes to the Army, the Indonesian Army is the land branch of the Indonesian National Armed Forces. Since the nation's independence movement, the Indonesian Army has been involved in multifaceted operations, ranging from the incorporation of Western New Guinea, the Indonesia-Malaysia confrontation, to the annexation of East Timor, as well as internal counterinsurgency operations in Aceh, Maluku, and Papua. When it comes to military expenditures, it features a military budget of $8.05 billion with a 1% GDP. Manpower includes active personnel of 395,000 with a reserve of 400,000 and an available 52 million. Mano, tempat Land forces include 408 tanks with 1,249 AFVs, an artillery of 356, 141 self-propelled guns, and a rocket artillery of 86.
When it comes to the Navy, the Indonesian Navy is the naval branch of the Indonesian National Armed Forces, founded on the 10th of September 1945, and has a role to patrol Indonesia's lengthy coastline, to enforce and patrol the territorial waters and exclusive economic zone of Indonesia, and to protect Indonesia's maritime strategic interests, as well as the islands surrounding Indonesia, and also to defend against seaborne threats. The Navy features a total naval fleet of 147, which includes 24 corvettes, 8 frigates, and 5 submarines. The Air Forces. The Indonesian Air Force is the aerial branch of the Indonesian National Armed Forces. The Indonesian Air Force is headquartered in Jakarta, Indonesia, and is headed by the Chief of Staff of the Air Force. Its order of battle is split into 3 Air Force operational commands, and most of its air bases are located on the island of Java. The Indonesian Air Force also has its ground force unit called the Air Force Special Forces Corps. The Corps is also known as Orange Berets due to their distinctive color of their service headgear. In addition, while not part of the Air Force, most of the personnel of the Indonesian National Air Defense Forces Command are picked from the Air Force, and its commander is always an Air Force 2-star marshal. The Air Forces include a total aircraft of 420, which also features 11 fighters, 64 multi-role aircrafts, 15 attack aircrafts, and 64 helicopters. We hope that you like this video. Let us know what you think about the Indonesian National Armed Forces in the comments section below, and also include your opinion of what they could use in their arsenal. Be sure to subscribe, turn on the bell for notifications, and I'll bring you more great videos like this one in the future. See you next time. Okay bro. माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो थी और भाई ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। भाई ने इंडोनेशिया की आर्मी के बारे में बताया, जिसमें आर्मी, नेवी और एयर फोर्स थी, और देखकर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और आज हमने फर्स्ट टाइम ये चीज़ें देखी हैं, इनकी एयर फोर्स देखी है और नेवी देखी है, देखकर हमारा दिल जो है खुश हो गया। माशाल्लाह इंडोनेशिया जैसे हर चीज़ में डेवलपमेंट कर रहा है, वैसे इंडोनेशिया आर्मी के लिहाज में भी बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, बहुत तरक्की कर रहा है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए, आमीन। इंडोनेशिया आर्मी में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अभी आज हमने देखा है इनके पास वेपन भी बहुत ज़्यादा कमाल के वेपन है, जो देखकर यार मेरा दिल खुश हो गया। और भाई ने इस वीडियो क्रिएट किया है, देखकर मजा आया जी। इसकी आर्मी पहली बार मैंने देखी है, देखकर बहुत खुशी हुई। हमारी दुआ है इससे हो तरक्की करें, आमीन। इंडोनेशिया की आर्मी बहुत ज़बरदस्त है और मैंने देख वो हैरान रह गया कि इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा तरक्की करे, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की करे। हमने एंजॉय किया, आई होप कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, इसी चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको फॉलो करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।